गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे प्रेपरेशन ऑफ द गामा हेलो एसिड्स। अगर प्रेपरेशन ऑफ गामा हेलो एसिड पढ़ना है तो उसके लिए देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CWH। दिस इज हियर ब्यूट, दिस इज हियर इट इज ब्यूट 3ene and 1 oic acid. So if we take both the but 3ene 1 oic acid, इसके अंदर अगर हम यहाँ पे HCl डाल दें तो what we will get here CH2 Cl CH2 CH2 and CWH, and this is called here gamma halo acid. So exactly if we have to add here the HCl and the HCl की addition से जो है gamma halo acid जो है वो बनती है। तो what is the mechanism is here, as we know that here is HCl which will dissociate into H positive and the Cl negative ion, and this is the first step of this reaction. Secondly, if we have CH2 CH CH2 and CWH, so this is but 3ene 1 oic acid, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब यहाँ पे ये वाला बॉन्ड सिग्मा है, ये पाई है, तो ये जो पाई बॉन्ड है वो उसकी इलेक्ट्रोडेंसिटी पाई की जो इलेक्ट्रोडेंसिटी है वो प्रोटॉन को अप्रोच करेगी। तो देयरफॉर same is here, this pi bond has been broken from here, और ये वाला जो यहाँ से अगर ब्रेक कर लेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये वाला CH2 इसके साथ जुड़ जाएगा। तो therefore what we will get here CH2 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 and CWH, and after that you know very well HCl के अंदर से एक Cl एक्टिव भी आया था, तो वो Cl एक्टिव जो है वो इस पॉजिटिव के ऊपर जब अटैक करेगा तो therefore we will get here gamma halo acids. So this is the one of the method of the preparation of the gamma halo acid. एक और मेथड भी है, this is the first method is there. Second is if we have the gamma hydroxy acid, this is the gamma hydroxy acid. This is the alpha, this is beta, this is gamma. तो with respect to this functional group this is gamma carbon, और अगर ये इस with respect to इसके देखें तो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो गामा के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा है? हाइड्रोक्सी, that is called gamma hydroxy acid. If we talk about that HCl is added is here, so what we will get here Cl CH2 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 and CWH with the loss of what here? Water. And you know see that here with respect to this functional group, this is carbon alpha, this is beta and this is gamma, and that is called here gamma halo acids. So in that case if we talk about the mechanism, so this is the HCl which is dissociating to H positive and the Cl negative. This is the first step of this reaction. Secondly, if we have here is OH CH2 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 and CWH, और इसके अंदर पहले एसिड रिएक्ट करेगा। You know that this is जो इसमें से हाइड्रोक्सी एसिड है, ये गामा हाइड्रोक्सी एसिड है ये, तो this is alpha, this is beta, this is gamma and this is called gamma hydroxy acid. तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर, तो ये जो लोन पेयर है वो इस प्रोटॉन को अप्रोच करेंगे। Therefore we get here O, here is H, CH2 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 and CWH. This oxygen carrying a charge positive, and because ये ऑक्सीजन अपने अगर लोन पे डोनेट करेगी इस H पॉजिटिव को, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, बिकॉज बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए if we talk about the covalent bond is formed by the
म्यूचुअल शेयरिंग, बट हियर द बोथ आर इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन ही डोनेट कर रही है। तो अगर ऑक्सीजन डोनेट करेगी तो वैसे हम उसको नेगेटिव बॉन्ड कहते हैं, लेकिन वी आर नॉट शोइंग हियर। तो अदरवाइज इफ दीज टू इलेक्ट्रॉन आर जो है वो ऑक्सीजन ने ही डोनेट किए हैं, तो देयरफॉर ऑक्सीजन कैरिंग चार्ज पॉजिटिव। एज वी नो दैट the oxygen is more electronegative than that of the carbon, so therefore it will withdraw the electron density toward itself, and therefore it will become H2O, and this carbon will carry the charge positive. So if we talk about that, this is the CH2, 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 and here is the COH, and this carbon will carry the charge positive. And after that अगर हम Cl की डिस्कशन करते हैं कि यहाँ पे HCl था, तो इसका Cl जो है वो इस कार्बन के ऊपर आके जाएगा। तो therefore what we will get here Cl, CH2, 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 and here is COH. This is alpha, this is beta, this is gamma, and this is called here gamma halo acids. This is one of the method of the preparation of the gamma halo acids. अब इसके बाद जो नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टीज है ऑफ द गामा हलो एसिड्स। सबसे पहले आ जाती है एसिडिक स्ट्रेंथ। इफ वी टॉक अबाउट द केमिकल रिएक्शन ऑफ द हलो एसिड्स, सो केमिकल reactions of halo acids, chemical reactions of halo acids। तो सबसे पहले जो है एसिडिक स्ट्रेंथ की डिस्कशन है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ विच वन, हैलो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। So let's see if we talk about the alpha halo acid की बात कर लेते हैं। alpha halo acids, if we talk about the alpha halo acid, you know that it is the Cl, if we talk about here FCH2 and COH. With respect to this functional group, there is only one carbon, and that's why if there is one carbon और उस कार्बन के साथ जो हैलोजन लगा उसे हम अल्फा हैलोजन कहेंगे। तो दिस इज कॉल्ड अल्फा हैलो एसिड्स। एंड इफ वी टॉक अबाउट हियर इज Cl, CH2 and COH. This is called chloroacetic acid, and if we with respect to this functional group, this is also alpha. And if we talk about here is Br, CH2 and COH. This is also alpha halo acid. This is the bromoacetic acid. Now, if we talk about the acidic strength out of these three, this is the fluoroacetic acid, this is the chloroacetic acid, and this is the bromoacetic acid. Out of these three, which is the stronger acid? This one is the fluoroacetic acid, is the stronger acid because the fluorine जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ जो है वो ज्यादा करेगी। इफ वी टॉक अबाउट दैट इन ए ओपन स्ट्रक्चर, दिस इज द CH2 and here is the C double bond O and here is H. इसको हम अगर ओपन स्ट्रक्चर देखें तो दिस इज द फ्लोरीन हैज अ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से विड्रॉ करेगी, फाइंड फ्रॉम हियर। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट दिस OH बॉन्ड गेट इंक्रीज। तो अगर OH बॉन्ड के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो देयरफॉर द रिलीज ऑफ प्रोटॉन इज इजियर हियर एज कंपेयर टू द अदर, बिकॉज़ यहां पे क्लोरीन की अगर डिस्कशन करें तो वो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं C_O and here is H। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी विथड्रॉ करने की जो पावर है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इज लेस एज कंपेयर टू दिस फ्लोरीन। So therefore this chlorine will also withdraw the electron toward itself, but less as compared to this chlorine. Therefore electron density at this OH bond will not decrease much, जितनी की यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे डिक्रीज ज्यादा करेगी तो रिलीज ऑफ प्रोटॉन इज इजियर हियर, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम डिक्रीज करेगी
तो therefore it is difficult to release here because इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो फ्लोरीन से कम है। अगर if we talk about the ब्रोमो, तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्लोरीन से भी ज्यादा कम है। So therefore if we talk about that, here is the Br and CH2 and C double bond O, here is O and here is H. So therefore bromine जो है due to the big size of the bromine atom, the electronegativity जो है उसकी कम है, तो therefore the release of proton is difficult in the case of bromoacetic acid. Therefore we decide here that this fluoroacetic acid is stronger acid than that of the chloro, and chloroacetic acid is stronger acid than that of the bromoacetic acid. This is all about the acidic strength. And if we talk about the this is one of the trends here. दूसरा trend ये आ जाता है, if we have here the Cl, CH2 and this one is the chloroacetic acid, जिसे हम कहते हैं alpha halo acids. And if we take here CH2, CH2 and COOH, with respect to this there is only one carbon and there is alpha, and with respect to this functional group there is two carbon and one of them is alpha and beta. This is called beta halo acids. And if this is the beta halo acid, and can we talk here CH2, CH2, CH2 and COOH. With respect to this functional group, this is alpha, this is beta and this gamma, and this is called here gamma halo acids. Now we have to compare the acidic strength of the alpha halo acid, beta halo acid and gamma halo acid. As we know that इसे हमें कुछ ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ये ज़्यादा stronger acid है than that of this one. Why that so? Because chloroacetic acid के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, this is इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो पहले भी मैंने डिस्कस किया, तो this is very close to this functional group. तो अगर हम बीटा हलो एसिड की बात करेंगे तो here is the two intervening carbon atom. तो in the case of beta there are the two intervening carbon atom and the Cl is the farther का मतलब थोड़ा दूर है, Cl is the farther than that of this functional group. And in the case of beta, there are the three intervening carbon atom, and the Cl is farther away from this functional group, and therefore this Cl cannot withdraw the electron density toward itself too much as compared to this alpha and beta. तो अगर ये क्लोरीन जितना जितना दूर होता जाएगा इस फंक्शनल ग्रुप से, तो जैसे यहाँ पे तो ये क्लोरीन जो है वो इस फंक्शनल ग्रुप के पास है, ये थोड़ा यहाँ से दूर है, ये यहाँ पे बिल्कुल और भी दूर हो गया. सो देयरफॉर दो विथड्रॉ करने की शक्ति जो है वो उतनी ही कम हो जाएगी. सो बिकॉज दिस क्लोरीन इज फर्दर अवे फ्रॉम दिस COOH ग्रुप, देयरफॉर जो रिलीज ऑफ प्रोटॉन है वो डिफिकल्ट विल बी हियर and as compared to easier here and most easy here. So therefore यहाँ पे हम डिस्कशन करें तो अल्फा हैलो एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है as compared to the beta halo acid and as compared to the gamma halo acids. This is also the discussion here. And similarly there is also, if we talk about that, this is the Cl, CH2 and COOH. This is what here अल्फा हैलो एसिड ही है ये, और इसको हम क्या कहते हैं क्लोरोएस्टिक एसिड. And if we talk about here, this is the Cl and Cl, CH2, CH, and this is called dichloroacetic acid, and this is the trichloroacetic acid. If we talk about that, this is the monochloroacetic acid, dichloroacetic acid, and the trichloroacetic acid, and these are also the halo acids. And if we talk about the acidity, you know very well that this is stronger acid than that of this one and that of this one, because in this there are three chlorine are present and they are electronegative. They will withdraw the electron density toward itself much
Therefore, the release of proton is easier here. If we talk about the open structure of this, if we talk, this is the C, here is the Cl, here is the Cl, and here is the C, double bond O, here is O and H, और ये अल्फा कार्बन है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शनल ग्रुप ये भी अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विथड्रॉ करेगा, ये भी क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विथड्रॉ करेगा, ये भी करेगा. तो आई विल शो दैट हियर 1 2 and 3 so this 3 arrow indicate that this 3 chlorine are present here, and the net effect of these 3 electrons will be on this bond. They will withdraw electronegativity toward itself. तो अगर यहाँ पे 3 क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, therefore इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल यहाँ पे जो है काफी ज्यादा डिक्रीज कर जाएगी एज कम्पेयर टू यहाँ पे 2 क्लोरीन लगे हैं, यहाँ पे 3 विथड्रॉ करने वाले हैं, यहाँ पे 2 है. सो देयरफॉर यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इस एज कम्पेयर टू यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा होगी, तो रिलीज ऑफ प्रोटॉन इज डिफिकल्ट, एंड यहाँ पे तो क्लोरीन ही एक है, so therefore the release of proton is difficult here. As we are discussing the comparison here, so this is the stronger acid than that of the dichloroacetic acid, which is the stronger acid than that of the chloroacetic acid. This is the bond of the acidic strength. The next is the next is the reaction of the carboxylic group. ये सेकंड पॉइंट है, एंड सबसे पहले आ जाती है फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्ट. फर्स्ट है कि फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट. तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो साल्ट बनाते हैं. तो सबसे जो बेस्ट एग्जांपल दे रखी है यहाँ पे 2 is R CHCl and COOH. This is the alpha halo acid. With respect to this functional group, this is only one carbon here. Here are the 2 carbon में से यहाँ पे R को भी हम कार्बन ट्रीट कर सकते हैं. बट अगर ये हाइड्रोजन पहली कार्बन में प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड हियर अल्फा हलो एसिड. तो इसकी जो है उन्होंने रिएक्शन करा रखी है सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3. तो what we will get here, we will get the salt here RCH COONA. This is the negative positive, and this is the Cl here. So this we get here what one of them is the we will get here carbon dioxide and water with the loss. We will get the salt. So this is the formation of the salt by the reaction of this carboxylic group. The reaction of this carboxylic group जो है तो resulting into we get here this salt. And the next is the esterification reaction. If we talk about the esterification reaction, and we have taken from here this is the RCH Cl COOH, और अगर उसकी रिएक्शन हम अल्कोहल के साथ कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो यहाँ पे जो हमारी रिएक्शन है, जो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होती है, here is RCH Cl and COO, and here is R dash, here is with the loss of what here? Water, and we will get here ester. तो C2H5 यहाँ पे लिख रखा है, otherwise we will take this one as example here.
तो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, एंड वी नो दैट इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम पहले भी काफी बार पढ़ चुके हैं। तो लेट्स सी, आई विल एक्सप्लेन हियर अगेन। एज वी नो दैट यहाँ पे ये HCl है, तो HCl जो है वो ब्रेक डाउन करके क्या देता है, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में देखें कि वी हैव टू टेक दिस अल्फा हेलो एसिड। अगर ये वाला अल्फा हेलो एसिड जो है वो मैंने यहाँ पे ओपन फॉर्म में लिख दिया है, तो अब यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन। यू नो दैट वेरी वेल कि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये वाले जो लोन पेयर है वो इसको अप्रोच करेंगे। बाय द वे ये लोन पेयर तो यहाँ पे भी प्रेजेंट है, बट हम पहले भी इसकी डिस्कशन कर चुके हैं कि यहाँ पे अगर ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेंगे तो यहाँ पे ये OH लग जाएगा और इस OH के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। उसका पॉजिटिव फिनिश करने के लिए मुझे कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, पाई। तो इट इज इजी टू ब्रेक पाई। लेकिन अगर मैं यहाँ ये H पॉजिटिव कहीं यहाँ पे अटैक कर जाए तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो इसका पॉजिटिव फिनिश करने के लिए सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है। तो सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना इट्स डिफिकल्ट। तो इजी से अगर काम हो रहा है तो व्हाई वी टेक द डिफिकल्ट पाथ। सो देयरफॉर we will get here RCH, here is the Cl, and here is OH, and here is OH. अब अगर इस ऑक्सीजन ने अपने लोन पे डोनेट कर दिए तो फिर ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। वो मैंने वहां पे लिखा है। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिस ऑक्सीजन डू नॉट रिक्वायर द पॉजिटिव। तो देयरफॉर ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। और साथ के साथ मैं यहाँ पे ये बता दूं कि ये जो अल्कोहल हमने यहाँ पे लिया था उसका साथ के साथ यहाँ पे मैं अटैक शो कर देता हूँ कि ये R अल्कोहल है। जब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो ये जो एक अल्कोहल है वो एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। अगर वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है तो ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा साइमल्टेनियसली। तो व्हाट वी विल गेट हियर, वी विल गेट हियर RCH Cl, here is OH, here is OH, and here is O, here is R dash, and here is H, and this। अगर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसको इस ऑक्सीजन ने लोन पे डोनेट करके इसका पॉजिटिव खत्म कर दिया, लेकिन फिर पॉजिटिव किसके ऊपर आएगा, इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर। सो देयरफॉर दिस ऑक्सीजन अगेन कैरी पॉजिटिव चार्ज, and you know that very well that this oxygen do not carry the positive and therefore with the electron density toward itself, ये अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो देयरफॉर H के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उस H पॉजिटिव के पास दो पॉसिबिलिटी है। वो H पॉजिटिव इन दोनों के ऊपर कहीं जाके अटैक कर सकता है। तो अगर मान लीजिए here is RCH, यहाँ पे Cl है, ये O, ये H और ये H, यहाँ पे OH है और यहाँ पे OR डैश है। मान लीजिए कि ये वाला H पॉजिटिव जो है वो यहाँ पे लग गया, तो फिर इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। Now we already discussed that this being an electronegative element, this oxygen do not require the positive. So therefore, what will happen now here? It will draw the electron density toward itself. तो अगर ये तो बन गया वाटर, it become H2O, वो तो लॉस हो जाएगा। तो दिस कार्बन की वैलेंसी कितनी रहेगी, 3, 1 2 3। तो ये वाला जो है बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। तो what we will get here is RCH, यहाँ पे Cl, C डबल बॉन्ड O, here is OR डैश, और साथ में क्या है H पॉजिटिव। वो H पॉजिटिव जो है वो ये वाला जब इस तरफ बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो H के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो देयरफॉर H पॉजिटिव जो है वो बाहर निकल जाएगा। वैसे भी इस पूरी रिएक्शन में
यहाँ पे HCl जो है वो H पॉजिटिव पहले स्टेप में डाला था, जो एक कैटलिस्ट का काम करेगा, एंड दैट रिमेन recover at the end of the reaction. So catalyst is a substance which speed up the reaction without being consumed in the reaction and recover same as at the end of the reaction. So this is all about of the esterification. The next जो reaction है वो किसकी है? रिएक्शन विद द फास्फोरस हाइड, RCH Cl COOH एंड PCl5 के साथ अगर रिएक्शन की जाए तो व्हाट इज प्रोडक्ट? तो उसके लिए हमें इसका मैकेनिज्म स्टडी करना पड़ेगा, बट वैसे हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स सी व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। Here is RCH Cl C double bond O, here is O and H, इसको हमने ओपन फॉर्म में लिख लेना है। Here is P Cl4 and Cl here. This PCl5 को हमने ऐसे लिख लिया। As we know that out of these phosphorus and chlorine, which is more electronegative here, chlorine is more electronegative. तो जो क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव विड्रॉ करेगी तो फास्फोरस के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो ये जो लोन पेयर है हम इसको अप्रोच करेंगे। तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर इज RCH, यहाँ पे Cl एंड C डबल बॉन्ड O, एंड हियर इज O के साथ में भी H है, PCl4। दिस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। ये ऑक्सीजन अपने अगर लोन पेयर इसको डोनेट करेगी तो ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगेगा, बिकॉज बॉन्ड बनाने के लिए म्यूचुअल शेयरिंग चाहिए। लेकिन यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने डोनेट की है, फास्फोरस का कोई नहीं है। सो देयरफॉर ये इसके साथ जब डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगेगा। तो बीइंग दिस ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव डू नॉट रिक्वायर द पॉजिटिव, ये वाला क्लोरीन Cl नेगेटिव और ये H के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो वो आपस में कंबाइन कर देंगे। तो देयरफॉर वी विल गेट HCl and here is the RCH, here is the Cl, C double bond O, here is O and P, here is the Cl and Cl3. So अगर मैं इसी डिस्कशन को मैंने इस तरह से लिख लिया। So now what happened here? This chlorine जो है, ये वाली जो क्लोरीन है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन दोबारा से विड्रॉ करेगी। तो अगर अपनी तरफ विड्रॉ करेगी तो therefore what will happen now here? It will withdraw the electronegativity toward itself, and we will get here RCH Cl C double bond O, this carry positive, और साथ में क्या हमें मिल गया? P double bond O Cl3, और साथ में जो है वो Cl एक्टिव भी तो निकला है, वो Cl एक्टिव इसको अप्रोच करेगा। Therefore what we will get here? RCH Cl and C double bond O and Cl. So this is called here acid chloride. So that we will get here. So this is all about of the reaction with the phosphorus halide. इसके बाद जो next reaction है reaction of the halogen atom. Next आ जाती है third reaction of halogen atom. जो हम अल्फा हेलो एसिड या बीटा हेलो एसिड या गामा हेलो एसिड की डिस्कशन कर रहे हैं उसके अंदर अब हैलोजन एटम की जो रिएक्शन है वो डिस्कस की जाएगी।
So first reaction is the reaction with alkalis. Reaction with alkalis. Here is the RCH Cl COOH. So this is the alpha halo acid. This will be with respect to this. There is alpha carbon and alpha carbon के ऊपर क्लोरीन है, that is alpha halo acid. इसके अंदर अगर हम बेस डालेंगे तो what will happen here? We will get here RCH Cl COO and A and साथ में वाटर निकलेगा. तो we will get here, this is the hydroxy acid, salt of hydroxy acid that we will get here. So after that अगर इसके अंदर वाटर जो है डाल दिया जाए तो what we will get here RCH OH and COOH. This is called here alpha hydroxy acids. This is called alpha hydroxy acids. What exactly happened here? ये जो रिएक्शन है इस तरह से होगी. तो अगर ये रिएक्शन को हम स्टेप बाय स्टेप लिख लें तो सी हियर कि हमने 2 NH डाले, पहले तो एक ही डलेगा. So you know that very well, this is base and this is acid. तो पहले तो एसिड बेस की रिएक्शन होगी तो व्हाट वी विल गेट हियर RCH Cl C double bond O N A, this नेगेटिव एंड दिस पॉजिटिव. जब ये डालेंगे तो साथ में जो है प्लस जो है वो वाटर बनेगा. तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप देयर. हियर दिस OH और AH आपस में रिएक्ट करेंगे. आफ्टर दैट अगेन if we add here base, so this you know that this chlorine is electronegative as compared to this carbon. तो यहाँ पे बेस जो है सोडियम पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव है. तो जब यहाँ पे ये विड्रॉ करेगा तो ये वाला जो है वो यहाँ पे आके जाएगा. तो व्हाट वी विल गेट हियर दी RCH और यहाँ पे ये OH एंड C डबल बॉन्ड O N A बन जाएगा. ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव. जो वाटर ये जो वाटर यहाँ पे इस स्टेप में निकला था उस वाटर को हम दोबारा से यहाँ पे डाल देंगे. वाटर एक वीक एसिड है. वो वीक एसिड जो है वाटर अपना ये वाटर जो है उसके अंदर से H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन निकलेंगे. तो वो क्या करेगा कि वाटर H पॉजिटिव इसको दे देगा. तो देयरफॉर वी विल गेट दिस वन और साथ में जो है -NH that we will get. So this is the reaction of the halogen acids जिसके अंदर उसका halogen atom जो है वो रिएक्ट कर रहा है. इसके बाद जो है वो बीटा हेलो एसिड की भी एग्जांपल्स जो है वो गिवन है हमारे पास. Beta halo acids. In that case, if we have RCH, Cl, CH2, C double bond OH और इसके अंदर अगर 2NH डाले जाएं तो यहाँ पे बुक में प्रोडक्ट बना रखा है कि कुछ जो प्रोडक्ट है उसका नाम लिख रखा है. दैट इज दी RCH OH CH2 and COOH. So this is the product. This is called beta hydroxy acid बना रखी है. तो beta hydroxy acid बनेगा कैसे? तो we will discuss it the step by step. अगर यहाँ पे इस रिएक्शन में मैं देखिए 2 स्टेप दे रखे हैं, 2 NH डाले हैं, लेकिन it will be added one by one. If we add this base in the first step,
यू नो दैट ये क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगी तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा, तो इजीली H पॉजिटिव बन जाएगा। और इसका H पॉजिटिव आयन इस NOH के बेस के साथ रिएक्ट करेगा। तो therefore what we will get here is RCH, here is Cl, here is the C double bond O negative and this is the positive। और जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो what we will get here water। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट स्टेप क्या है, दोबारा से हम बेस डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल डाला है, यहाँ पे देखिए दो की डिस्कशन हुई थी। तो दोबारा से अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, दिस इज द सोडियम पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रॉ करें, तो देयरफॉर क्लोरीन कैरी नेगेटिव एंड दिस कार्बन विल कैरी चार्ज पॉजिटिव। तो बेस में से जो OH नेगेटिव है वो इस कार्बन के ऊपर आके अटैक करेगा। तो व्हाट वी विल गेट हियर RCH, हियर इज द OH जो है यहाँ पे OH लग जाएगा एंड C डबल बॉन्ड O and A नेगेटिव जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। सो बाय द वे ये यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव है और जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो साथ में क्या बनेगा NaCl, क्योंकि इसका सोडियम पॉजिटिव एंड दिस क्लोरीन नेगेटिव विल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द NaCl। अब देखें ये पहले स्टेप में क्या निकला था वाटर, उस वाटर की एडिशन हम यहाँ पे करेंगे। तो यू नो दैट वेरी वेल दिस वाटर जो है वो एक वीक एसिड है, वो H पॉजिटिव आयन भी देता है और OH आयन भी देता है। तो हमने जब इसके अंदर डाला तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो व्हाट वी विल गेट हियर इज RCH, हियर इज OH एंड C डबल बॉन्ड OH, यानी कि वाटर में से जो H पॉजिटिव है वो यहाँ पे आके लग जाएगा एंड जो OH है वो Na के साथ रिएक्ट कर जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड हियर बीटा हाइड्रोक्सी एसिड मैंने बनाने थे, सॉरी वी हैव टेकन द वन मोर कार्बन हियर। अगर हम इसकी डिस्कशन कर रहे थे बीटा की तो सारी की सारी डिस्कशन ये बीटा के साथ ही है कि अब यहाँ पे एक और कार्बन लेना था। सो सॉरी फॉर दैट के वी हैव टू डिस्कस हियर दिस वन मोर कार्बन। अगर ये सारा का सारा स्टेप ऐसे ही होगा, सिर्फ एक कार्बन और बढ़ानी है, तो दैट विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स। सो that is the same thing is here and similarly there is the one more example is the by the beta halo acids। next is the beta halo acids। so if we talk about this Cl, CH2 and CH2 and COOH, with respect to this functional group this is alpha, beta and this is gamma। और अगर इसको हम ऐसे लिख लें CH2 CO, here is OH, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे Cl। तो इट इज लाइक दिस वे, इसी कंपाउंड को हमने ऐसे लिख लिया। तो दैट इज नथिंग चेंज, जस्ट उसको ऐसे लिखा ही है एंड Cl and if the Cl is here, here is the bond O and here is OH is here। You know the very well, अगर इसके अंदर हम बेस डालेंगे तो you know that very well ये क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। तो जब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ डेंसिटी करेगी तो ये वाला जो है बेस ऑफ प्रोटॉन इजी हो जाएगा। तो अगर ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगी तो यहाँ पे से ये जो बेस है वो इस H को ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो ये क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रॉ करेगी फ्रॉम हियर टू हियर एंड हियर, so therefore this H positive will react with this base। So what we will get here
CH2, 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 and here is the Cl, C double bond O, and here is O negative and the sodium positive. And after that, if this chlorine withdraw the electron density toward itself, so this carbon will carry the charge positive. तो therefore this जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है नेगेटिव, तो ये इसको अप्रोच करेगी. तो therefore what we will get CH2, 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 here is O, and double bond O, and साथ में जो है वो NaCl, and this is called here gamma butyrolectron. This is the gamma butyrolectron. This is here gamma butyrolectron. So this is the method of the preparation of the butyrolectron. So we are discussing the reactions of the halogen atom की. ये जो halogen atom है वो अल्फा अगर लगा हो तो रिएक्शन उसकी कैसी होती है, बीटा के ऊपर लगा हो तो रिएक्शन कैसी होती है, and this is the last one is the gamma. And the last example is the decarboxylation reaction is left here. So what is that? So decarboxylation reaction. Decarboxylation reaction. In that case, if we take for the trichloroacetic acid Cl3 and C double bond O COH. This is called here trichloroacetic acid. What we will get here we get the here chloroform CHCl3 and carbon dioxide. So this is called as a decarboxylation reaction. Thank you very much.